Assalamu alaikum. Good evening, everybody. Thank you all for joining us. This is the first webinar being organized on the platform of Rise and Shine Pakistan. As the name suggests, it's a passion project at this point, driven by determination to bring about some change. A few friends of mine and I had a chat about, the state of Pakistan's economy. We keep discussing it, and we figured that we need to move beyond WhatsApp groups and, these in-person informal chats and have a proper forum. It's still not a proper forum. It's still early days. But thankfully, we have an expert like Dr. Anis Salman join us as a special guest for this first webinar. And the idea basically is to have an interactive discussion, learn about some of the economic policies that are being implemented, some that need to be changed, and some new ones that we can, viably implement. So I'll do a quick introduction of Dr. Salman. This won't do justice to his credentials and experience, but I'll skim through it very quickly. Dr. Salman holds the distinguished OGDCL IPRI Chair of Economic Security at the Islamabad Policy Research Institute, IPRI. As a leading international economist, he specializes in monetary resilience, diplomacy, leadership, transnational trade dynamics, strategy-driven policy formulation and evaluation. Internationally, he's been affiliated with the, excuse my pronunciation, Rensselaer University, USA, Harvard, Cambridge, and the University of Bern, Switzerland, among several others. He's chair Artificial Intelligence Policy Committee, Government of Pakistan. He's a visiting professor of Institute Superior of Economy, again French, the management, in France, Tsinghua University, Beijing, People's Republic of China. His high impact research has been widely recognized and adopted, influencing strategic planning, policy making across various sectors and organizations in Pakistan. Beyond his academic prowess, Dr. Salman is a master trainer, having imparted his expertise to bureaucrats, law enforcement agencies, military personnel, diplomats, and other key stakeholders, furthering the cause of informed economic decision-making and resilience. Dr. Salman will be focusing today on this post-conflict momentum, which hopefully, supposedly, we do have in Pakistan, and how best to leverage it. And I think a couple of key areas we want to focus on is, one, international engagements, how Pakistan can bolster its image within the international community and also have better trade and investment deals. And the second one, of course, is the one which resonates with a lot of us, is youth empowerment and engagement. Back-breaking, inflating. Usman, sorry, can you? Restaurant Oh, sorry, Johnny. Can you please mute yourself, or I'll do the introduction. Sorry. So I'm almost done with the introduction. So those are the two key areas Dr. Salman will be covering. And now I will give the floor to Dr. Salman. Thank you. First of all, I'll kick off with understanding the economics of Pakistan. And you see that हमारे बड़े mixed किस्म के reactions आते हैं, that whether the economy is going good or the economy is going bad or we are doomed, something like that. But in order to understand what is the direction of the economy, I think we have to be very unbiased. We have to be looking at what has been happening over the past 3-4 साल से क्या हो रहा है. And you might have seen that in the recent past, maybe after the conflict, or कुछ दायरों में तो कहा जाता है it's a war. After the war, the economy has gone good. On what basis we are saying that? जब भी आप किसी economic system को देखते हैं, whenever you are looking at some economy, so there are 4 basic variables on the basis of which you can say or you can compare it with other economies, and my primary focus would be South Asia. Number 1 is your economic growth rate, यानी आपका GDP किस rate के साथ grow कर रहा है. Then number 2 is basically your current account deficit. Number 3 is your budget deficit. And number 4 is basically your inflation. When I look at the GDP growth rate, that has not been very promising. अगर आप देखें, और अभी भी 2.5% पे हम ग्रो कर रहे हैं, और जो प्रोजेक्शन है दैट इज लाइक कि जी हम 3.5 तक जाएंगे, वर्ल्ड बैंक और IMF की जो प्रोजेक्शन है. बट why it is important, the pace by which the economy is growing, that matters. लेकिन
उसके साथ साथ अगर आप देखें कि अगर हम 3.5 पे जाते भी हैं तो वी नीड टू सी कि पाकिस्तान के अंदर व्हाट इज द पोटेंशियल, हम कहाँ तक मैक्सिमम ग्रो कर सकते हैं. सो व्हाट द हिस्ट्री सेज, व्हाट द previous data talks about कि पाकिस्तान, no matter what miracles हो जाएं, so the maximum what we have done is that we have grown till 5 to 6% तक हमने अपनी ग्रोथ की है. Number two, that 5 to 6% के बाद क्या होता है कि वी से कि जी जीडीपी हीट हो गया है, नाउ जीडीपी कूलिंग की जरूरत है. So the growth rate is still very low in Pakistan. Number two, as I talked about, is the current account. You see कि पिछले कई माह से we are saying that Pakistan has gone into current account surplus में चला गया है. Yes, it's a good news. It's a positive news. But you have to understand the economics behind it कि current account किस लिए surplus में गया है and why we are having these tweets of celebration कि जी for the first time पिछले 3 consecutive quarters में our current account is in surplus. हमने कुछ इकोनॉमिक इंटरवेंशंस की. द फर्स्ट वन हैज बीन के ईयर टू ईयर बैक हमने इंपोर्ट कंट्रोल्स कर दिए, इंपोर्ट कोटास कर दिए. तो जब आपकी इंपोर्ट आपकी कंट्रोल्ड होगी, एक्सपोर्ट्स तो आपकी बढ़ नहीं रही, तो आपका उससे बैलेंस ऑफ ट्रेड थोड़ा सा बेहतर हो जाता है. लेकिन अभी अगर आप करंट अकाउंट सरप्लस देखें तो एक और उसकी वजह यह है कि करंट अकाउंट में एक आपकी बैलेंस ऑफ ट्रेड आती है और दूसरी आपकी रेमिटेंसेस आती हैं, विच आर द यूनिलैटरल ट्रांसफर्स. सो अभी भी आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड which is the difference of exports and imports, वो अभी भी आपका डेफिसिट में है. तो फिर करंट अकाउंट सरप्लस इस वजह से हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ द रेमिटेंसेस. 30 बिलियन एनुअल आपकी रेमिटेंसेस पाकिस्तान के अंदर आती हैं. सो दैट इज बेसिकली वन ऑफ द रीजंस कि हम करंट अकाउंट सरप्लस के अंदर हैं. Few days later the budget is going to be announced और उसमें हमारा जो बजट डेफिसिट है, बजट डेफिसिट इज बेसिकली कि हम कितना रेवेन्यू हम कलेक्ट कर रहे हैं और कितनी हम एक्सपेंडिचर्स हैं. सो हमारे एक्सपेंडिचर्स 1 ट्रिलियन कम हो रहे हैं, which is a good thing. There's a fiscal discipline in the economy. So the budget का जो डेफिसिट है वो भी थोड़ा सा कम हुआ है. बट दिस डजंट मीन दैट वी हैव अ सरप्लस बजट, वी ऑलरेडी हैव अ बजट डेफिसिट. लेकिन इसी के अंदर एक और टर्मिनोलॉजी मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिस्ट आप सुनेंगे आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट पिछले 1 साल से और ये प्रोजेक्शन है कि अगले साल भी ये होगा, दैट आपका प्राइमरी सरप्लस हो रहा है. Now, what exactly is primary surplus? कि जब आप अपने basic sources of revenue और अपने basic expenditures को देखते हैं तो आपका revenue is surplus as compared to your expenditures, which is a good thing. ठीक है, which is taking you towards stability. So our we have a primary surplus over the last 2 quarters and अब भी हम expect कर रहे हैं कि आपका primary surplus होगा. And the last variable by which we can say कि जी economy is stable, that is the inflation. At the moment आज किसी ने 0.3 बताया, लेकिन अगर आप पिछले 2-3 वीक्स को देखें, so the inflation in May has been 0.7 और कहते हैं कि 65 years के अंदर this is the lowest inflation that we Pakistan has experienced. अब इसके ऊपर भी 2 debates हैं. Some says कि भी last year in the same month April the inflation was around 24% और अब 0.7% है. हमें इस वजह से कम लगती है because last year was a high base year. So when the base year is high, so that's why you are feeling the inflation. But it is not inflation, this is the inflation rate. So inflation rate कम हुआ है. Otherwise अगर आप अपनी देखें in terms of purchasing power के क्या आपके पैसे में अभी भी उतनी कुवत है कि आप वो चीजें खरीद सके, यू वुड से कि जी आई एम नॉट इकोनॉमिकली बेटर ऑफ, बट द इकोनॉमिक नंबर्स आर स्टेटिंग सम अदर स्टोरी. सो व्हेन यू लुक एट these 4 variables, the growth rate, the current account, the budget deficits, and the last one is inflation. तो you say कि पाकिस्तान इकोनॉमी पिछले जो लास्ट 1.5 ईयर से कुछ स्टेबिलिटी के साइंस दिखा रही है. यू कैन सी कि आपकी जो इंटरेस्ट रेट थी एट वन पॉइंट
it was before COVID के बाद, it has reached to maximum 22% पे गई और आज आपका interest rate 11% है. And 11% is also still a very high interest rate. लेकिन the ideal interest rate should be 5 to 6%, but given we have tamed the inflation, that's why the interest rate is now going down. In terms of your foreign reserves, they stand around 11 to 12 billion, which is not something to be proud of. और आपको फॉरेन रिजर्व्स की ज़रूरत है बिकॉज हमारी ज़्यादा इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंस है. तो इंपोर्ट बिल आपका अब आगे बढ़ेगा क्योंकि आपके ये इंपोर्ट कंट्रोल्स ख़त्म हो रहे हैं. सो यू नीड मोर फॉरेक्स. The question comes that पाकिस्तान के पास कितना एटलीस्ट फॉरेन एक्सचेंज होना चाहिए which keeps the economy जिसे कहते हैं एक बफर में या which makes the economy resilient. At EPRI we did some basic research और उसके अंदर the number that came up जिस तरह मैंने इंटरेस्ट रेट के बारे में बताया that it needs to be from 5 to 6 इंटरेस्ट रेट होना चाहिए, an ideal one for Pakistan. Similarly, अगर आपके पास 30 billion US dollars home. So that is where the economy is in good shape in terms of the वो जिसे कहते हैं reserves, ताकि आपके अपने जो import के जो expenditures हैं आप उनको पूरा कर सकते हैं. So after the four variables, then looking at the forex, then we look at what has happened recently. There are three major contributors or three major sectors किसी भी economy के होते हैं. Number one is agriculture, number two is your manufacturing slash industry, and number three is your services. अब जब हम इन तीनों को, and you can look at the economic survey, आप अगर देखते हैं and even if you Google it and you say कि जी what is the contribution of these three sectors in the economy और आप पिछले 10 साल का अगर डेटा देखते हैं तो you will see that it is very stagnant. यानी over the last 10 years your agriculture is around 18 to 22%, यानी वही 20% के गिर्द roundabout कर रहा है. Your services is around 52% and your industry is around 31%, sums up to 100. So you see कि पिछले 10 साल से ये सेक्टर ऑलमोस्ट इतना ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. And the bigger question comes in कि जब आप human capital, जब यूनिवर्सिटी से graduates आपके निकल रहे हैं, where are they getting absorbed? And later on I'll be coming on to what are the bigger challenges that we need to look out when we are talking about कि जी this is a moment of national unity. अब हम किस तरीके से इस opportunity को use करें. So the 10-year data shows that these sectors have been inert. They have not made any productivity enhancement. Pakistan can I say that it's not about production, it is about productivity. हमारे यहाँ पे productivity stagnation है. Like you can talk to a common citizen and if you're working from 9 to 5, you cannot say कि मैं अगर 10 साल काम करूँगा तो I will be earning this much income that I can have my own house. And when I say own house, it means कि सबसे बड़ा जो post retirement expenditure हमने देखा है in the past, I'm talking about 50s, 60s, when people would try, the first thing would be that they would dream of making their own house. But now, if I ask the present generation, even if we are in nominal terms, हमारी शायद salaries ज़्यादा हैं as compared to our like forefathers, we are still unable to pass that statement that we can make our own house by that particular income that we are going to get after retirement. It is impossible. So that is basically the state of our three sectors: service, agriculture, and manufacturing. One more important thing that I want to highlight is that when you look at the कि जी आपके जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किस चीज की है, और फिर
IMF भी आपको ये कहता है जी आप स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट्स करें. सो अ वेरी क्विक थिंग कि जब हमने जीडीपी को मेजर करना होता है, द इजी इक्वेशन और द सिंपलर इक्वेशन इज y is equal to c plus I plus g plus x minus m. C is your consumption, I is your investment, G is your government expenditures और x minus m net exports है. अब हुआ ये है कि व्हेन यू लुक एट द जीडीपी इस वक्त, लाइक 3-4 days बैक द रिपोर्ट केम्स कि पाकिस्तान का जो जीडीपी है दैट स्टैंड्स एट 400 बिलियन यूएस डॉलर्स. और पहले हम 340 350 पढ़ रहे थे. नाउ इट हैज इंक्रीज्ड टू 400 बिलियन यूएस डॉलर्स. एंड द क्वेश्चन इज कि इस जीडीपी में किस वेरिएबल की सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है. आइदर इट इज कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या आपकी नेट एक्सपोर्ट्स. एंड इट स्टार्टल्स मी व्हेन आई से कि कंजम्पशन इज द मेजर कंट्रीब्यूटर. कि अगर आपका जीडीपी अगर बढ़ रहा है तो उसमें सबसे ज्यादा शेयर आपकी कंजम्पशन का है. और ये कंजम्पशन आती है, अगर मैं परसेंटेज में बताऊं, सो 96% इज योर कंजम्पशन इन योर जीडीपी इक्वेशन. अब बाकी तीन वेरिएबल्स देख लें, which is very important, that actually defines that what would be the economic trajectory. It comes to investment, it comes to government expenditures and your net exports. इन तीनों को सम करें तो वो बनता है कुछ 6%. So this is where the problem lies. जब आप कहते हैं ना कि स्ट्रक्चरल चेंजेस करें, तो स्ट्रक्चरल चेंजेस मीन्स कि आप अपने कंजम्पशन पैटर्न को चेंज करें. और इस कंजम्पशन के भी अंदर आप देखेंगे कि 40 to 60% is your household consumption. So that consumption is leading you towards the increase or towards this GDP equation. The third and the last point that I want to make about this is कि किसी भी इकोनॉमी में we already talked about कि तीन sectors हैं. One is your agriculture, manufacturing and your service sector. When you look at the traditional, और जब आप ये डेवलप्ड इकोनॉमीज को देखते हैं कि उनके ट्रेडिशनल सेक्टर्स थे पहले एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से फिर हम ट्रांजिशन करते हैं इंडस्ट्री की तरफ, और इंडस्ट्री से फिर हम ट्रांजिशन करते हैं सर्विसेज सेक्टर की तरफ, which is very much which has very much happened for Pakistan also. कि हमने पहले एग्रीकल्चर, फिर मैन्युफैक्चरिंग और फिर सर्विस. लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि एग्रीकल्चर से जब हम मैन्युफैक्चरिंग में हमने ट्रांजिशन की, तो मैन्युफैक्चरिंग में बिफोर वी वेंट फॉर द मेच्योरिटी कि आपके मुल्क में इंडस्ट्रियल बेस, एक अच्छी स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस बने, वी हॉप्ड ऑन टू सर्विस सेक्टर. एंड दैट्स व्हाई वी आर सफरिंग टुडे कि जो चीज़ें हम नहीं बना सकते, हमें फिर क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है. एंड जिसकी वजह से आपका इंपोर्ट बिल आपका इंक्रीज हो रहा होता है. एंड विच कॉजेज योर बैलेंस ऑफ ट्रेड क्राइसिस, जहां पे आपकी एक्सपोर्ट्स कम है और आपकी इंपोर्ट्स ज्यादा हो जाती है. और इंपोर्ट्स इस वजह से ज्यादा हो रही हैं क्योंकि हमने अपनी इंडस्ट्रियल बेस को डेवलप ही नहीं करने दिया. दैट द थिंग्स वी could have produced now are they being imported. Regarding one more aspect that I want to make is कि हम जब हम रेवेन्यू साइड किसी मुल्क की देखते हैं, एज आई टोल्ड यू कि उसमें दो चीजें हैं. टैक्स इज वन ऑफ द मेजर सोर्सेज. सो टैक्स के अंदर आपका एक डायरेक्ट टैक्स है और एक इनडायरेक्ट टैक्स है. पाकिस्तान के अंदर देखें तो वी हैव बिन टॉकिंग अबाउट द इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा करता है, दैट इज अराउंड 60%, और डायरेक्ट टैक्सेस 40% पे आते हैं. लेकिन अभी मैंने जिस स्टार्ट ऑफ द दिस डिस्कोर्स मैंने बताया कि इन टर्म्स ऑफ द रेवेन्यू के आपने अपने इंपोर्ट कंट्रोल्स लगाए हुए थे. बेसिकली तो ये इम्पोर्ट्स ड्यूटीज, दिस इज अ नॉन टैक्स रेवेन्यू, लेकिन हम इसको उसी रेवेन्यू के अंदर लेते हैं. तो व्हाट हैज हैपेंड कि जब आपने ये इम्पोर्ट कंट्रोल्स लगाए तो आपका जो इनडायरेक्ट टैक्स विच वाज अराउंड 60% वो कम हो गया. एंड last year it was around 50-50% था. and like 50% आपका डायरेक्ट टैक्सेशन से रेवेन्यू आ रहा था और 50% आपका इनडायरेक्ट टैक्सेशन से रेवेन्यू आ रहा था. Now, looking at the way forward, I will talk about कि post conflict में मेरे जहन में तीन एग्जाम्पल्स आती हैं, and then we can learn कि what Pakistan should be doing और हम इसको किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं.
The first one is your Marshall Plan. Germany के अंदर after the Second World War, 48 to 52, and what they did after the conflict, that there was rapid cash injections. बहुत ज़्यादा उसकी इकोनॉमी के अंदर cash आया. नंबर दो उन्होंने क्या किया, and that was basically the aid. नंबर टू उन्होंने conditional trade liberalization की, and which what led to that there was a 25% आपका जो जीडीपी था वो 4 साल के अंदर 25% आपका जीडीपी ग्रो किया. So the lesson that we learned from Germany after that post-conflict is कि aid को आप हमेशा किसके साथ tie in करें with the institutional reforms. The second example that one can learn is from Rwanda. अब रवांडा 2020 के अंदर क्या करता है, उसने अपना एक विजन दिया 2020 में, एंड दिस वाज बेसिकली कि उन्होंने प्रायोरिटी किसको बनाया, दैट वाज द आईसीटी सेक्टर. और उस आईसीटी सेक्टर के साथ द हार्डवेयर दैट इट वाज बिल्डिंग, साथ साथ उसने वोकेशनल ट्रेनिंग की. एंड what happened was कि जो उनकी एम्प्लॉयमेंट थी, अब एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी दो है कि हमारा जो सबसे बड़ा आई थिंक जो मसला है दैट इज द यूथ अनएम्प्लॉयमेंट. सो व्हाट हैपेंड वाज कि देयर वाज अ 30% इम्प्रूवमेंट इन द यूथ एम्प्लॉयमेंट. एंड the lesson that we learn is कि आप जितनी जल्दी अपनी skills को develop करते हैं for a particular infrastructure, that really helps in terms of your GDP growth. Pakistan के अंदर now we are in that final phase of our AI policy. Artificial intelligence policy हमारी बन गई है. It is yet to be approved, so it is a matter of days कि हमारी आती है. और I am the chair for the national AI policy. और सबसे बड़ा जो हमें चैलेंज आता है that हाँ, आपने साइबर सिक्योरिटी की बात कर दी, आपने इंटरनेशनल लिंकेजेस की बात कर दी, आपने प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप्स और वहाँ पे किस तरीके से आप अपने एआई के को रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं. लेकिन ये सब करने के बावजूद you will still be standing at the same point because we do not have the kind of human resource. And again, I said, I'm not talking about the number of human beings, I'm talking about the human capital. That do you have the right kind of human capital जो कि इस upcoming जो आपका जो मार्केट है, दैट इज द एआई मार्केट, क्या उसके अंदर डिमांड और सप्लाई की मैच हो जाएगी? आई डाउट इट दैट आर institutions at the moment are working on that aspect or not. Then the last one is the case of Tunisia. अब ट्यूनीशिया ने क्या किया, उसके अंदर वो अपनी फाइनेंशियल मार्केट्स को लेके आया. उसने अपने स्मॉल एंड मीडियम क्रेडिट को इम्प्रूव किया. एंड दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट 2011 से 14 तक उसने क्या किया कि मोबाइल पेमेंट्स को लेके आया. एंड विद इन 2 years कोई 10,000 वहाँ पे एमएसएमईज आई. एंड देयर वाज फिनटेक के साथ उन्होंने साथ साथ अपने बिजनेसेस को प्रमोट किया. अभी in the morning I was at this National School of Public Policy के अंदर, वहाँ पे we were training these bureaucrats. और वहाँ पे सबसे बड़ा challenge ये आता है that आप जब अपनी ह्यूमन रिसोर्स को फ्यूचर ट्रेंड्स के मुकाबले में ट्रेन नहीं करेंगे, सो दैट इज गोइंग टू बी अ डिमांड एंड सप्लाई डेफिसिट. व्हाट can be done and what should be done is, number one is that I think सबसे बड़ा जो ticking bomb है, and that is basically the youth unemployment. और उसके अंदर I always say that we have to question ourselves. We are increasing the number of universities in Pakistan. अगर आप HEC के डेटा को देखें तो the number of private universities have increased remarkably. Public universities के पास पैसे नहीं है to run the universities, but you are still increasing the number of universities. But the bigger question is the kind of output these universities are producing, the kind of human capital, the graduates that we are producing, क्या उनकी market के अंदर demand है?
The answer is very much visible. You can look at the rate of unemployment, youth unemployment in Pakistan. और उसको कुछ लोग नेगेटिव में भी लेते हैं कि that the amount of people right now applying for visas कि जी हमने बाहर जाना है, maybe for the study purpose, or we don't want to come back to Pakistan because they don't find those economic opportunities. Number two, that you have to see that the kind of businesses. Yes, we talk about elites, we talk about अदर इश्यूज की, जी यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी है, गवर्नमेंट फुटप्रिंट बहुत ज्यादा है, 11% पे कौन लोन लेगा इन ऑर्डर टू डू द बिजनेस एंड ऑल दैट. बट we haven't created that ecosystem where we talk about के आपके मुल्क का जो एंटरप्रेन्योर है वो मुल्क में पैसा लगाए, यानी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड. एंड समहाउ एक बड़ा गलत नोशन रहा है और वो अभी भी है प्रेवलेंट. एंड I tend to talk to the government people कि भी this notion needs to be changed. We think कि अगर domestic investment काम नहीं कर रही, if you are not treating the domestic entrepreneurs like the kings because they are doing a great job, that they are not investing somewhere else. लेकिन अब ट्रेंड ऐसा आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते. आप दुबई में देख लें, यूएई में देख लें, the amount of Pakistani money that is being invested over there. फिर the kind of schemes that are here, like US ने start की, and there are other countries कि जो आप इतनी investment लेके हैं तो Pakistanis are taking out the investment that they are putting it in other countries. So what are bureaucracy or policy makers think कि ठीक है अगर domestic investment नहीं काम करी तो let's bring foreign investment. And this is the bigger mistake. I know foreign investment helps, but the the notion is that foreign investor always follow the boom. It does not create the boom. And foreign investment सिर्फ एक मीटिंग के साथ, meet and greet के साथ नहीं आती. The companies have the plans, वो long term के लिए आती हैं आपके मुल्क में. So I'm not talking about the portfolio investment. We need the direct investment. So it takes time. And when we are talking about the timelines, so this notion कि जी foreign investment आके उस gap को fill कर देगी, this doesn't work. So Pakistan के अंदर, I think we need to focus on the domestic investment that a Pakistani businessman, entrepreneur is willing कि मुझे अपनी investment के ऊपर इतने high returns मिल रहे हैं that I don't want to put my money in some other economies. And the third one, which is very important, and that is basically the digital engagement. I think we lack that skill set, and we do not have that kind of ecosystem. और जबकि हमारे neighbor में the creation of the IITs, जिस तरीके से उन्होंने अपने human capital को develop किया, and now American economy is totally dependent upon India with reference to their IT jobs, with reference to the IT skills. Pakistan needs to have that kind of AI plan, and it should be an AI emergency plan, that how we can create that kind of human resource which actually caters to that demand. हमें लगता है that when we are dealing or when we have these contracts from the companies abroad, और वो छोटे छोटे contracts हैं, if you look at it, we do not focus on कि पाकिस्तान के अंदर आपको AI ecosystem इतना robust बनाना है that people come over here and they set up their companies. We do not have that kind of ecosystem at the moment, and we need to have that. अगर आप आईटी सेक्टर के अंदर ग्रो करना चाहते हैं, हमें हमारी ह्यूमन रिसोर्स को क्रिएट करना पड़ेगा. यू नीड टू रीवैम्प योर एकेडमिक करिकुलम्स, जैसे चाइना ने किया कि क्लास 6 से एआई इज गोइंग टू बी मैंडेटरी. Higher Education Commission should be making AI as a mandatory subject, and it is not the domain of CS. एक ये भी हमारी परसेप्शन है कि जी सिर्फ CS वाला AI कर सकता है. It is domain for everyone. Pharmaceutical, business graduates, economics वाले सारों को आनी चाहिए वो domain knowledge, and then they can apply that. And I think this is where we can make a difference, and this is where the world is heading. My last intervention would be that after this conflict, where we should be going
is basically that when you look at the this human resource, we see कि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट है। जो चीज़ हम प्रोड्यूस कर रहे हैं क्या उसकी डिमांड है या नहीं? And the production is not of the goods. I'm talking about the human resource. अगर हम उसको गुड्स की लेंस के साथ देखें तो इफ यू लुक एट द बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ चाइना prior to 2005, you won't see any solar panel over there. कि जी चाइना कोई सोलर पैनल एक्सपोर्ट कर रहा है, and I'm talking about 2004, 2005. Today, China is one of the largest exporters of solar panels. Why? बिकॉज चाइना ने अपनी डोमेस्टिक नीड को पूरा करने के लिए सोलर पैनल्स नहीं बनाए थे। उसको नजर आ रहा था दैट यूरोप एंड यू अदर कंट्रीज दे आर गोइंग टू go for solarization, and China built that capacity. So you need to create, or you need to cater to the demand which is in the international market. You should not be looking at कि मैं क्या बना सकता हूँ, मेरे ह्यूमन कैपिटल की capacity and capability क्या है. We need to see that, okay, how I can use this human capital in order to cater to the international demand. तब आपके forex reserves वो जो है ना अभी जो 11 बिलियन पे है, they move on towards 30 billion. So lastly कि ये जो चीजें हैं they do not happen in stages. They do not happen कि पहले स्टेप 1 कर लो, स्टेप 2 कर लो, स्टेप 3 कर लो, फिर हम इसे आपको यहाँ पे concurrent approach चाहिए that okay you are developing the AI also, you are talking about the MSMEs also, you are making the human capital also, और वहां पे फिर आपको उसको सिंकिंग की जरूरत है। पाकिस्तान का एक और बहुत जिसे कहते हैं ना सैड अलमिया ये रहा है कि हम यहाँ पे पॉलिसीज तो बनाते हैं, and if you look at the public policy space, we have excellent policies. You name the issue and you have a policy on it. May it be water policy, energy policy, agriculture policy, industry policy. आप policies बना रहे हैं, बनती जा रही हैं, but why the policies are not giving us the result? उसके अंदर एक जो बल्कि दो जो मैं चीज़ें माय एक्सपीरियंस विद 3 पब्लिक पॉलिसीज जो मैं बना रहा था, क्लाइमेट चेंज पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी एंड द एआई पॉलिसी, वो ये है कि नंबर 1 थिंग इज द पॉलिसीज इन पाकिस्तान आर मेड इन आइसोलेशन। यानी अगर आप वाटर पॉलिसी बना रहे हैं तो आप फूड सिक्योरिटी पॉलिसी और क्लाइमेट चेंज पॉलिसी को बिल्कुल मद्देनजर रखते ही नहीं। So the policies are made in isolation, and that's why we become the victim of policy paralysis. Number 1. Number 2, एक ये culture आया है, and I'm using the word culture, that when you have a policy at a federal level, ठीक है, I'll talk about climate change policy, कि आपके पास एक federal level पे public policy है जिसका नाम है National Climate Change Policy, तो फिर आप प्रोविंशियल लेवल पे भी अपनी एक पॉलिसी बना लेते हैं। आप कहते हैं पंजाब की अपनी क्लाइमेट चेंज पॉलिसी है, सिंध की अपनी है, खैबर पख्तूनख्वा की अपनी है, बलोचिस्तान कहते हैं मुझे जरूरत ही नहीं है। सो व्हेन अ ब्यूरोक्रेट और व्हेन अ गवर्नमेंट ऑफिशियल हु इज पोस्टेड इन फेडरल, वो फिर फेडरल पॉलिसी को देख रहा होता है, एंड व्हेन द सेम ब्यूरोक्रेट इज पोस्टेड इन पंजाब, वो फिर पंजाब की पॉलिसी को देखता है। दिस इज वेयर द पॉलिसीज स्टार्ट गेटिंग कॉन्फ्लिक्ट। पंजाब वाला कहते हैं कि जी आई एम गोइंग टू फोकस ऑन माय क्लाइमेट पॉलिसी, आई हैव नथिंग टू डू विद द फेडरल पॉलिसी, वो तो इस्लामाबाद की है। व्हाट शुड बी डन is that policy has to be maintained at a federal level because that is how it should work, और जो provincial level पे है आपको frameworks बनाने चाहिए that okay कि आप उस policy से which is a guiding document which is just giving you the direction, तो आप उसमें से अपना framework बनाएं given your capacity and capability, और आप उस policy को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, और हर सूबा अपनी रिसोर्सेज के मुताबिक उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करें, लेकिन पॉलिसी आपकी एक होनी चाहिए। आई थिंक दैट इज ऑल्सो वन ऑफ अ वेरी क्रिटिकल इशूज विच our policy experts do not understand, and we have a very active solution to any problem that let's make a policy, और हम समझते हैं कि the day we have made the policy,
आपका वो कामयाब जवान की पॉलिसी बना ली आपने, वो माइक्रो फाइनेंस की पॉलिसी बना ली, अभी मेरी इमिग्रेशन की पॉलिसी आ रही, नार्को पॉलिसी आ गई, सो दैट एक्चुअली सॉल्व्स द प्रॉब्लम. इट डजंट सॉल्व द प्रॉब्लम until and unless that policy is not giving you the outcome or the reason why you made that policy. If that problem has not been solved, I think we have been unsuccessful in terms of our the policy creation. So we need to reassess which policies work and which policies do not work. My last one line is solarization is good. Pakistan is a case study for the world, the ways we have done solarization. An interesting aspect is that दुनिया में अर्बन से रूरल में गई सोलराइजेशन, पाकिस्तान में रूरल से अर्बन में गई, एंड देयर वाज नो पॉलिसी फॉर दैट. कुछ होती हैं कॉन्शियस पॉलिसीज, जो मैं भी आपको बता रहा था कि जी क्लाइमेट चेंज, नेशनल सिक्योरिटी, दीज आर द कॉन्शियस पॉलिसीज, एंड अनफॉर्चुनेटली हमें उस किस्म के रिजल्ट नहीं मिले. और देयर आर सर्टन नो पॉलिसीज unconscious, and the solarization is one of the things where people have moved towards renewables. कि आपकी इतनी ज्यादा वो टैरिफ्स लग रहे थे, इतना ज्यादा बिजली एक्सपेंसिव, that people themselves, it was not the government that incentivized you or they told you. लेकिन आप देखें in the upcoming budget that they are talking about कि जी इन solar panels पे भी आप ड्यूटी लगाएं, so I am sure that it doesn't reduce the enthusiasm by which urban areas and the rural areas are going for solarization. But I think uh, कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जहां पे आपको पॉलिसी की जरूरत नहीं होती, बट दैट इज बेसिकली और नेशनली आप मोटिवेटेड होते हैं कि हमने ये काम करना है. आई थिंक यूथ के साथ आपकी जो एसएमईज हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे यू नीड टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, यू नीड टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ इकोसिस्टम वेयर पीपल देमसेल्व्स आर ड्रिवन कि जी हमने ये काम करना है. Thank you very much for your patient listening, and back to Sujat sir. Thank you, Dr. Salman. There's a lot to process, but thank you so much for the insightful presentation. Very comprehensive. It almost took me back to my college days when I was studying economics, when he broke down the sectors of the economy and the consumption plus investment, all that. So fascinating stuff. I will open the floor now, but before that, I'll just make a couple of quick points. One thing which was sort of illuminating for me, something I did not know about, was that it's not so much the policy itself, it's how it's made. So it seems like it's almost an art, in terms of making a policy, because if you need ultimately ownership of a policy, you need to have the stakeholders involved from the outset. And I think perhaps we have this backwards at times. Somebody just comes out with the policy just for the sake of having a policy because it's a new fad, everybody's doing it, the neighbors are doing it, countries in the region are doing it. But they haven't thought it through that, when the time comes to implement it, will there be supporters and people who own up to it, right? So I think that's something that's very interesting. And also, I think the mismatch in terms of skills, the demand and supply when it comes to youth empowerment, employment, I think that's a very important point as well. That not just about setting up nice universities. It's also about focusing on what is being taught there and how it is being taught there, because it has to cater to the demands of the market. So those two really stood out for me. But I'd like to open the floor. If people have any questions, any proposals, recommendations, please feel free to jump in. We'd like to hear from you. And you can turn on your camera if you like. If you can keep it off if you like, but it's up to you. Wasim Hassan, I'd like to ask a question. Please go ahead. Well, we've, as Dr. Salman has explained really well how we need to create a synergy between policy making at different levels, like the national and the provincial levels, and sort of recalling the events of the conflict between India and Pakistan, as the AVM said that Pakistan has sort of mastered the art of sort of multi-domain fighting. I'm just wondering what are the hindrances in us being able to create that synergy in terms of policy making, whereas our armed forces are so well equipped to do it, and they've showed it as well. Thank you. A very right observation. लेकिन Wasim साहब, if you look at the
the kind of environment or the kind of synergy we had before this event, so that you would see it wasn't like that. There was quite a polarization, and there was a divide. There was a distance between the citizens and their beliefs. Lekin I think what brings this energy is basically that what unites us as a nation. We need to have that common objective. And this time, I think there was no need to elaborate or to write it somewhere, explicitly tell that, okay, we all have a common objective to make Pakistan secure, that no one from outside can hurt people. And that united the nation. And it's not the first time. We have seen it in 65. We have seen it at different times. Lekin, what is missing in terms of the nation building is that what finding that one thing that unites us. Unfortunately, जब हम पाकिस्तान को देखते हैं ना तो I always give a very simple example. All of us in this room, in this virtual gathering, if we look back, हम 20 years back देखें what as an individual I was and what I am after 20 years, I think it's a remarkable improvement. I have grown. It is better, better income, better lifestyle, and all that. लेकिन अगर मैं यही पूछूं that okay, how is the country today? All of us would say, well, it's not going good. So why is it possible that individually we have grown so well, but जब मैं cumulative देखता हूँ as a society, I feel bad about it कि जी as a society हमको अच्छे तरीके से grow नहीं किया. The reason is कि मेरे individual goals इतने strong हो जाते हैं कि मैं वो जो common goal है उसको भूल जाता हूँ. And I think this conflict gave us a common goal which united us, and we need to find those intersections. We need to find that common goal which actually unite us as a nation. That one is missing. That's why कि हमें वो forces में नजर आ जाता है क्योंकि दुश्मन एक है सारों का. लेकिन हमें यहाँ पे एज अ सोसाइटी जब हम पॉलिसी बना रहे होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज अपनी पॉलिसी वो सेल कर रही होती है, आपकी वाटर वाली अपनी कर रही है, एग्रीकल्चर अपने कर रहा है, हज वाली पॉलिसी अपनी है. सो देयर हैज टू बी अ पॉलिसी सिंकिंग वेयर वी फाइंड कि अच्छा व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट पॉलिसी एंड व्हाट यूनाइट्स अस एज अ नेशन. और इसमें टाइम लगता है नेशन बिल्डिंग में. It has when you look at the developed countries, even उनको भी time लगा. So in my personal opinion, I'm still optimistic, and if we tinker or if we keep giving us each other a nudge, things can get better. Usman Khan. Dr. Sahib, thank you so much for this session. Really appreciate it. Rana, thank you Yair, for organizing this. Appreciate that. Dr. Sahib, I deal with different sectors in Pakistan related to energy, and very, very small player in agro commodities, between Africa and Brazil, Europe. So thoda sa, I'm pretty hands-on with, the trade routes and how international global trade happens. So my question is, when I work in Pakistan, I see a big disconnect between what is actually happening on the ground vis-a-vis industry, vis-a-vis, you take any example. So, for example, I deal with the liquefied petroleum gas sector in Pakistan. I'm one of the very small importers in Pakistan for that. The Ministry of Energy and what actually happens on the ground during the whole import process, the Ministry of Finance, how we open LCs, how we do. There is a huge disconnect. And Yeah. I'm in Islamabad usually for 3-4 days a week. And one of my, the core work that I do most of the time is firefighting between my entity and the government and, all the government agencies. So I feel there's a huge disconnect between the civil bureaucracy who are actually running Pakistan, for civilians like me and you and everybody else on this call, and what actually is happening on the ground vis-a-vis people who are actually doing the work. So, Port Authority में कुछ और हो रहा है,
वो रिपोर्ट कुछ और होता है. सो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट को पता ही नहीं है कि पोर्ट पे क्या हो रहा है. मतलब आई कैन से इट विद 99.99 सर्टेनिटी कि उनको ह्यूज डिस्कनेक्ट है उनका. अच्छा, कितना टैक्स चोरी है एफपीआर को पता ही नहीं है. एफपीआर को यही नहीं पता कि शिप में आ क्या रहा है, कौन सा मिक्स आ रहा है. मैं अपनी सेक्टर की बात कर रहा हूँ. उस मिक्स पे उसको क्या ड्यूटी चार्ज करनी चाहिए. अच्छा, सैंक्शन पोर्ट से चीजें आ रही हैं which obviously puts Pakistan at a big risk of US sanctions and everything. People still don't get it. So how do we minimize that disconnect? Because what is actually happening on the ground and what the government thinks and makes the policy, तो policy तो मेरे हिसाब से वो बना ही नहीं सकती कि उनको reality नहीं पता. So how do we bridge that gap? Usman sir, I totally agree with your observation. And once you question it, na, were things really bad when you look at, I think, 20, 30 years back? So when you meet the senior businessmen people, they might say कि नहीं पहले चीजें कुछ बेहतर थी, now they have gone worse. And you're absolutely right that what is happening on ground, वो उनको पता नहीं होता. But मैं थोड़ा सा I differ कि उनको पता होता है, that's why they are letting it happening. अगर उनको ये पता ना हो, अगर उनको ये लूप होल्स ना पता हो, तो वो शायद corrective action ले लें. But the problem is that in Pakistan we let that happen. अगर मैं यहीं पे इसी रूम में कोई एफबीआर का और कस्टम्स का बंदा बैठा हो, शायद उसको सब कुछ पता हो. बट व्हाई दे आर नॉट डूइंग इट? दे वुड से कि वी आर स्मॉल प्लेयर्स, ये तो चीज बहुत बड़े वाले लेवल पे आती है. और व्हाई थिंग्स आर नॉट गेटिंग करेक्टेड, उसकी जो सबसे बड़ी आई थिंक इशू है ना, वो ये है दैट if I am doing something wrong, which I know it's wrong, but why I am doing it? Because I know I will not be caught. I know I am not going to be penalized. अगर आपके वहां पे ट्रांसपेरेंसी या अगर आपके वहां पे पेनल्टी या अगर आपके वहां पे ये हो, वाई सिस्टम्स आर वर्किंग इन यूएस, वही चीज यू कैन डू इट. दीज थिंग्स व्हाट यू हैव टू डू द फायर फाइट इन इस्लामाबाद, और आपका बड़ा लेजिट बिजनेस होता है और आप बता रहे होते हैं कि भी हमने करना है, एंड यू फील लाइक क्रिमिनल कि जिसमें मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ. बट द प्रॉब्लम इज दैट व्हाई इट इज हैपनिंग, बिकॉज something bad is happening, and that bad is happening because I know I'm not going to be caught. के अंदर वो वाली ट्रांसपेरेंसी, अगर आप उसके अंदर उस गवर्नेंस को अगर बेहतर करते हैं, जहां पे ब्यूरोक्रेट को सीनियर है जूनियर है, उसको पता हो दैट आई विल, इफ आई मेक दिस पर्टिकुलर mistake, I will be penalized for that. I don't think so anyone will do that. I'll give you a small agar Sajad bhai, if we have time, like Of course, Singapore please. is the only country, अगर आप economics में देखें कि which was earlier development literature में पहले it was called as a developing country, now it is known as a developed economy. और सिंगापुर ने क्या किया, तीन चीजें उसने की. एंड द फर्स्ट थिंग उसने कहा कि व्हाई डेवलपिंग कंट्रीज आर इन दिस स्टेट, क्योंकि वो एक काम करती है कि व्हेन समवन इज ऑन द टॉप, सो वो जो उसके जो नौ रतन होते हैं, जो एडवाइजर्स होते हैं, जो की पोजीशंस होती हैं, वो जो टॉप गाय होता है वो अपने रिश्तेदारों को लगाता है, अपने फ्रेंड्स को लगाता है, वो मेरिट पे नहीं आते. एंड दैट इज द सीरियस प्रॉब्लम ऑफ मेरिटोक्रेसी. और अगर आप ली क्वान को देखें, ही हिमसेल्फ वाज अ हार्वर्ड कैनेडी स्कूल से गवर्नेंस पढ़ के आया, एंड देन ही स्टार्टेड मेकिंग सिंगापुर व्हाट इट इज. सो ही वाज ट्रेन्ड, ही केम ऑन मेरिट. इट वाज नॉट बेसिकली किसी ने उसको उस जॉब पे लगा दिया था. सो ही सेज द फर्स्ट थिंग इज that why we are suffering, these developing countries suffer कि वहां पे merit नहीं होता. People are not assigned positions because of their competence. वो दोस्ती की वजह से आते हैं. नंबर टू, उसने कहा कि हमारे कुछ कंफर्मेटरी बायसेस होते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल कैपिटलिज्म है तो हमने कैपिटलिज्म को पकड़ के रखना है, हम और कोई चीज अच्छी किसी और सिस्टम की बोरो नहीं करते. एंड ही सेज अ वेरी फेमस थिंग अबाउट कन्फ्यूशियस कि इट डजंट मैटर इफ द कैट इज ब्लैक और वाइट टिल इट कैचेस द माउस. हम क्या करते हैं, हम उस रंग में फंसे होते हैं, एंड वी डू नॉट पिक अप थिंग्स दैट आर वर्किंग. अगर ग्रामीण बैंक
बांग्लादेश के अंदर काम कर सकते हैं तो उसकी कौन सी चीज हम टेलर कर सकते हैं दैट वर्क्स इन पाकिस्तान। अगर मैं मिडिल ईस्ट में जाता हूँ, सुबह जाता हूँ और बाय द टाइम आफ्टर 3-4 आवर्स आई कम आउट और मेरे पास मेरी कंपनी का एनओसी है, कंपनी रजिस्टर होगी, व्हाई कैन नॉट इट वर्क इन पाकिस्तान? बिकॉज हम उसके सिस्टम में जा रहे होते हैं और ब्यूरोक्रेसी इज वेरी गुड। आज मैं ये उनको बता रहा था दैट यू आर वेरी गुड इन मेकिंग रूल्स but you don't know how to facilitate, you don't know how to ease them। हम रूल्स सख्त बना रहे होते हैं कि जनाब एक दफा आए और इस बंदा कभी वापस ना जाए हमारे ऑफिस में, दोबारा फिर ना आए, इसको हम इतना बुरा एक्सपीरियंस दें। दिस डजंट हैपन इन लाइक आई वर्कड इन लैटिन अमेरिका, यूएस, यूके। वहां पे वो फैसिलिटेट करेंगे। आप लोन लेने चले जाएं, आपको कंप्यूटर पे मिल जाता है, फोन पे मिल जाता है। यहाँ पे आप देख लें आपको कितना वो दे गेट ऑल द डॉक्यूमेंट्स और फिर भी आपका लोन नहीं अप्रूव होगा। आई वाज लुकिंग एट द यूथ, वो जो आसान कर्जों की थी, सबसे ज्यादा हाई रिजेक्शन रेट है वहां पे, और आप कर्जा दे रहे हैं कि जी आपका एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम काम करे। The third, so one was merit, number two was pragmatism, and number three is basically कि आपकी जो corruption है। And what he says कि सिंगापुर के अंदर उसने कहा मेरा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एक टूर पे गया, and by the time he landed we arrested him, he was furious and we asked him that okay, you went on the foreign tour, who sponsored it? उसने कहा मेरे दोस्त ने मुझे पैसे दिए थे, he sponsored it। उसने कहा if your friend has sponsored it, it means that he is going to take favor from you। now this is the deputy prime minister and they placed him in jail और अभी कुछ नहीं हुआ, कोई करप्शन नहीं हुआ। हमारे यहाँ पे होता है जब हमने करप्शन को पकड़ना होता है, हम एक 17वें ग्रेड के, हम 12वें ग्रेड के बंदे को पकड़ते हैं, वी ब्रिंग नैब एंड ऑल दैट, तस्वीरें खींचेंगे कि जी आपने करप्शन पकड़ ली है। वी नेवर जिसे कहते हैं हिट द टॉप गाय। यहाँ पे आप देख लें नैब की इफेक्टिवनेस, आप देख लें कि क्या करप्शन कम होगी आपने एक अदारा बनाया? इट हैजंट। सो द प्रॉब्लम इज कि मेरिटोक्रेसी, pragmatism, and the third one is your corruption। के अगर इन तीन चीजों को आप देख लें, the things that you were talking about, I think that will not be happening। अगर मैं as a bureaucrat, अगर मैं as a technocrat, if I am giving you that kind of hard time, I'm giving you because I know कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जब एक क्लार्क वहां पे बैठा हुआ है एंड यू आर एक्चुअली डूइंग गुड टू पाकिस्तान, यू आर सेइंग कि जी ट्रेड करना है, एलसी खोलनी है, एंड दे आर शोइंग that kind of negative behavior, so he is actually asking you कि उस्मान साहब आप प्लीज बिजनेस बाहर लेके जाएं, we don't want you in Pakistan। so this is the kind of this is the kind of behavior that we have in Pakistan। Usman, yeah, please go ahead. Ji, I'll introduce you. It's Harun Baracha. He is the MD, chairman of the Islamabad Stock Exchange. He has a question for Dr. Salman. Salam, sir. Hope all Assalamu well, sir. alaikum। Sir, I have a question. Do you think any major policy shifts or changes need to be introduced into the exploration policy? Because as far as I know, that the next game changer for Pakistan could be the discovery, or will be the discovery of minerals and natural resources, which we haven't done. So do you think there is any need or for change in the exploration policy to invite people to exploit this potential of Pakistan, especially in Balochistan? देखिए जी, इसके अंदर दो व्यूज हैं। एक व्यू मैं आपको बताता हूँ दैट मिनरल्स इज गुड, इट इज वन ऑफ द अनटैप्ड, बट अभी तो नहीं आया, दे हैव बीन देयर फॉर द लास्ट सो मेनी इयर्स। Right. But there are two approaches. Number one approach is that do Pakistani entrepreneurs or industrialists have that competence that they can explore those minerals? क्योंकि अभी तो चाइना वाले और ये रिकॉर्डिक में भी हम देख रहे हैं that we are trying to invite people from abroad। What we have seen that there's a phenomena called the resource curse, और जहाँ पे भी मिनरल जिसे कहते हैं ना मिनरल कंट्रीज थी, वहां पे कोई दूसरा बाहर से इन्वेस्टर आया, उसने मिनरल्स लिए एंड सारा कुछ बाहर चला गया, और जो होस्ट कंट्री थी जहां पे मिनरल्स से उनको कुछ नहीं मिला। देयर आर लीडिंग एग्जांपल्स ऑन इट, लिटरेचर अवेलेबल है। What policy shift that we should be doing is that we need to encourage our domestic industrialists that they have that competence and capacity कि वो उसको explore करें। अगर अभी भी हम बाहर वालों पे रखेंगे,
then it's something like an ईस्ट इंडिया कंपनी के आए, आपसे रिसोर्सेज लिए और आपकी टर्म्स ऑफ ट्रेड को उन्होंने खराब कर दिया. सो आई थिंक दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट नीड टू फोकस कि जी आप कितना इंसेंटिवाइज करते हैं और जो हमारा डोमेस्टिक इन्वेस्टर है वो कितना इंटरेस्ट लेता है. So it is more of like you see that the next age is the age of electric vehicles. सबसे ज्यादा जो इस वक्त R&D हो रही है वो सिर्फ एक सेक्टर में हो रही है, and I'm sure about Europe. वो हो रही है that okay how to make the battery life the longest. और पाकिस्तान के अंदर we have those inputs in terms of those minerals कि वो ingredients हैं which are going to enhance the life of a battery. Now we need that R&D. अब अगर हम किसी बाहर वाले से लेंगे तो सारा कुछ तो वो ले जाएगा. व्हाट इज द इंसेंटिव? आपने किस किस्म का वो कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, आप किस किस्म से वो जो पॉलिसी है उसके अंदर आप डोमेस्टिक इंडस्ट्रियलिस्ट को कितना एडवांटेज देते हैं दैट ही इज विलिंग टू टेक द रिस्क कि मैं मशीनरी बाहर से इंपोर्ट करके आप पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर इज गोइंग टू टैप दीज रिसोर्सेज. आई थिंक दिस इज वेरी क्रिटिकल. अदरवाइज वी आल्सो बिकम अ कंट्री जहां पर रिसोर्स कर्स होगा. मिनरल्स आर गुड, प्लीज. कर्स का गैप मुझे अभी आई एम जस्ट इम्प्रोवाइजिंग टॉकिंग टू यू बिकॉज मुझे ये एस्पेक्ट नहीं था दिमाग में. सर किसी ने कैपिटल मार्केट्स को पाकिस्तान की नहीं टैप किया टू रेज फंड्स? बिकॉज जितने भी हैं कंपनीज आईपीओ करती हैं, एक्सपेंशन आईपीओ के थ्रू होती है, अपने पैसे तो now there's plenty of now interest in stock market. I can see people taking interest. So I think अगर कोई इस तरह की कंपनी लॉन्च हो या इंडस्ट्रीज को किया जाए, ये encourage किया जाए कि यू कम एंड रजिस्टर कंपनी और आप आईपीओ करें और हम ये पर्टिकुलरली गवर्नमेंट हम करेंगे, तो आई थिंक लॉट ऑफ मनी कैन बी रेज्ड फ्रॉम द कैपिटल मार्केट्स क्योंकि पीपल आर लुकिंग फॉर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है कोई नहीं. तो इस पर भी ज़्यादा स्टडी होनी चाहिए कि यूज द कैपिटल मार्केट ऑफ पाकिस्तान टू रेज दोस फंड्स. इंडस्ट्री अपना पैसा नहीं लगाएंगे शायद, पर अगर आईपीओ से रेज हो बड़े पैसे आ सकते हैं. एब्सोल्युटली. हमने असल में अपनी कैपिटल मार्केट्स के पोटेंशियल को कभी उस तरीके से देखा ही नहीं, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट को या द पर्सन हु इज गोइंग टू टेक द रिस्क उसको इतना ज्यादा हाई रिस्क बना दिया कि वो समझता है कि जी शायद इट्स गोइंग टू फेल आउट. वी नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ environment where the investor thinks that it is the right venture to invest money. हमारे यहाँ पे I have a survey, एक हमने वो ब्लिंक सर्वे किया और हमने कहा अच्छा वेयर वुड यू लाइक टू इन्वेस्ट मनी. पाकिस्तान के अंदर विदाउट एग्जैजरेशन 60 to 70% ऑफ द पीपल लाइक टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट. द मैथमेटिक्स इज सिंपल कि जी रिटर्न हमें ज्यादा मिलता है जिसमें भी आपको 3.5-4 लाख इन्वेस्टर है. दूसरा मैं tell you that when I began my question, it was purely from the point of view of inviting foreign investors. अब आपसे बात करने के बाद ये नया एवेन्यू मेरे दिमाग में आया है कि वो तो मेरा क्वेश्चन एक्चुअली था towards foreign investor, but this is also food for thought that I'll also think and try to pitch it to my people in PSX that but also if you can also talk to people in the private sector, and I'm sure we have got very good financial services. Absolutely. But thank you so much for Sajid, thank you. Pleasure. Thank you, sir. I know we are beyond the time. This is Jahanzeb Zafar. मैं राणा साहब क्वेश्चन कर सकता हूं? Of course, please go ahead. We're behind schedule, doesn't matter. We started later. जी. As long as Dr. Suman is okay with that, I don't want to keep him. No, I'm perfectly fine. Okay. Sure. Thank you so much. This is by far one of the best webinars I've attended in recent past. एक मेरा क्वेश्चन है, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बहुत ज़्यादा इंप्रेशन ये दिया जाता था कि वो इसलिए नहीं हो सकती कि बिजली नहीं है और सारा, लेकिन फिर हमें पता चला है कि हमारे पास तो एक्सेस बिजली है. तो अब मैन्युफैक्चरिंग का फिर मसला सिर्फ कैपिटल का ही है और लोगों की यहाँ इन्वेस्ट ना करने का जो एक एटीट्यूड है और कैपिटल मूव करने का. एक ये मेरा क्वेश्चन है जी. और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है. अब गीजी जर्मन कंपनी है, कितने सालों से एफबीआर के साथ कंसल्टिंग करते रहे हैं और सारा कुछ करते रहे. ये लगता है कि अंदर से मतलब करना चाहते हैं टैक्स रिफॉर्म्स, लेकिन उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट, एंड बाय द वे लाइक आई एम अ सीपीए एंड अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. आई हैव वर्कड विद आईआरएस, सीआरए एंड एफबीआर और काफी ज्यादा एक्सटेंसिवली. एंड मेरे ख्याल सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को सही करने की. लेकिन हम सिर्फ खेलते रहते हैं विद होल्डिंग टैक्सेस से, इससे उससे, शॉर्ट टर्म रेवेन्यू जनरेशन से. और वो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो है उसको चेंज करने के लिए ज़्यादा थोड़ा टाइम भी चाहिए, बट गुड प्लान एंड इट कैन बी डन.
and without interference from people on the other side, like the commissioners हैं मसलन जो run कर रहे हैं इसको, उसके बजाय ये establishment division ये चीजें कर सकती है, which is for example changing the system how tax office works. Nobody can go in, they can only meet customer service people who are not tax assessors or anything, you know, इस तरह के changes. लेकिन ये लग रहा है कि कोई will नहीं है. आपको भी इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? So close to these things. There's a very pertinent questions. The first one, जब हम मैन्युफैक्चरिंग को देखते हैं ना, तो मैन्युफैक्चरिंग को तो हम होलिस्टिक लेते हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हाउ आई कैटेगराइज, एक है सबसे बड़ा आपका मैन्युफैक्चरर, लेट्स सपोज नॉट वांट टू टेक स्पेसिफिक नेम्स, इंटरलूप को ले लें या कर ले, बड़े वाले हैं. अब ये जो बड़े वाले हैं, दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट के एनर्जी क्राइसिस क्या हो रहा है, पर यूनिट कॉस्ट कितनी होगी है. एंड इफ यू लुक एट द बैलेंस शीट्स, कोई लॉसेस नहीं आए पाकिस्तान के अंदर. जितना भी चेंजेस आए हैं ये सारे को, सोलराइजेशन आ गई, एंड दे आर वेरी मच प्रोएक्टिव के जैसे जैसे नए यूरोप के रूल्स एंड रेगुलेशंस आ रहे हैं, ये कंपनीज अपनी ह्यूमन रिसोर्स के अपने प्रोडक्ट्स को उसके मुताबिक टेलर भी कर रहे होते हैं. फिर एक होता है, आई गो टू द लास्ट वन, एक होता है छोटा वाला, बिल्कुल सोलर मैन जो कोई बस कुछ ऑर्डर्स बनाए अपनी सबसिस्टेंस के लिए या अपनी सस्टेनेंस के लिए वो काम कर रहा है. एंड देन कम्स जो सबसे ज्यादा विक्टिमाइज होता है ना, दैट इज द मिडल वन, जो मैन्युफैक्चरिंग में जो ना बहुत बड़ा है और ना बहुत छोटा है, लेकिन ही इज अ वाइट कॉलर मैन्युफैक्चरर जिसका नंबर भी ज्यादा है, who is getting affected by these energy costs, who is getting affected by these tariff policy and all that. अब वो either they sustain the pressure or they start evaporating. हमने अभी recently देखा है कि मैन्युफैक्चरिंग में ये जो मिडल वाला जो था ना, व्हाइट कॉलर, they have started evaporating. Either they have started diversifying their business, or they have closed it, or they are moving into some other dimensions. So पॉलिसीज जब हम देख रहे होते हैं तो वी हैव टू कीप दैट मिडल वन, क्योंकि जो छोटा वाला है वो पहले भी कुंडे से ही बिजली चोरी कर रहा है और अपना बिजनेस चला रहा है, उसको उस तरीके से इतना वल्नरेबिलिटी नहीं होती. सो जो सबसे बड़ा वाला है उसके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि अगर कोई इस किस्म के शॉक्स आते भी हैं, दे हैव द रीबाउंड कैपेसिटी. दैट काउंट्स अ लॉट कि उनका फाइनेंशियल कैपिटल इतना है, उनकी मार्केट्स ऐसी हैं दैट दे कैन इजीली रीबाउंड, दे डोंट गेट अफेक्टेड बाय दैट. जो सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है दैट इज दिस व्हाइट कॉलर, जो कि है बिजनेसमैन, बट नाउ ही इज जस्ट मीटिंग हिज बोथ हैंड्स मीट बिकॉज दीज पॉलिसीज आर रियली अफेक्टिंग हिज बिजनेस. वो करना भी अच्छा बिजनेस चाहता है, उसमें कोई दो नंबरी भी नहीं करना चाहता, बट the government and the pressures are pushing him to the limit that he says कि जी now I should give up or I should move somewhere else. So that is the problem. So you don't, अब हम पॉलिसी जब बना रहे होते हैं, क्योंकि वो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, यू आर कीपिंग देम इन माइंड दैट ओके हाउ देयर बिजनेसेस आर गोइंग टू फ्लरिश. सो आई थिंक दैट इज कि पॉलिसी आपकी blanket policy, मेरे ख्याल में that is not working. It has to be a targeted policies keeping in mind the entrepreneurs that are getting affected. So that was the response to first question, if I am able to respond well to that. दूसरा वाला जो आपने बात की, an absolute true observation. अभी आप बता रहे थे वो जर्मन कंपनी, अभी हमने मैकिन्जी को हायर किया. अब मैकिन्जी आके आपको बहुत अच्छा फ्रेमवर्क दे देता है दैट ओके दिस इज द फ्रेमवर्क एंड इफ यू अप्लाई दिस आपका टैक्स रेवेन्यू बढ़ जाएगा. पाकिस्तान के अंदर भी से कि जी हमारे जो फाइलर्स थे उनका नंबर बढ़ा है, बट इट हैज नॉट इम्प्रूव्ड इन टर्म्स ऑफ योर टैक्स रेवेन्यू. सो इफ द नंबर ऑफ फाइलर्स आर इंक्रीजिंग, व्हाई द टैक्स रेवेन्यू इज नॉट इंक्रीजिंग. अब योर पॉइंट वाज वैलिड कि हम वहां पे सामने कस्टमर सर्विसेज वाले को मिल लेते हैं, पीछे बैकग्राउंड हमें पता ही नहीं, टैक्स इंस्पेक्टर क्या कर रहा है, ऑल दैट हाउ इट हैज बीन कैलकुलेटेड. मेरी जो प्रॉब्लम होती है, इट्स जस्ट एन ऑटोमेटेड रिप्लाई, सो आई एम नॉट सेटिस्फाइड. विद रेफरेंस टू ब्यूरोक्रेसी, एक बड़ी मजे की टर्म एक हम हार्वर्ड में किया करते थे, एंड दैट इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिक मिमिक्री. अब आइसोमॉर्फिक मिमिक्री की एग्जांपल ये है, एंड दिस इज क्लासिक केस फॉर अ ब्यूरोक्रेसी, कि अगर आपने एक टर्टल को, एक कछुए को अगर आप कहते हैं कि वो वॉक करे, इट शुड मूव, दैट मशीनरी शुड मूव, द टर्टल शुड मूव, तो ही हैज टू टेक हिज हेड आउट, तभी वो मूव करेगा, अदरवाइज वो नहीं मूव करेगा. हमारे यहाँ पे जब ये एग्जोजनस
पॉलिटिकल प्रेशर्स आते हैं ब्यूरोक्रेसी पे, कोई कुछ कहता है कि जी आप ये कर दे वो कर दे, वहां पे आइसोमॉर्फिक मिमिक्री आ जाती है कि वो अपना सर ब्यूरोक्रेट अंदर कर लेता है। अब जब वो शेल के अंदर सर है, आप चाहे कुछ कर लें, मैकिंजी आ जाए, बिल गेट्स आ जाए, जब उसने नहीं चेंज होना, ही और शी इज नॉट गोइंग टू बी प्रोडक्टिव। And this is the classic case why our government machineries are known for this mimicry, that they just put their head back in the shell. वो कहते हैं politicians तो आते जाते रहते हैं, ये भी आते जाते रहेंगे, हम तो उसी position पे रहेंगे, and they don't let the system change. और वो कब change होगा? When they want to change. And we have seen कि जब कोई government machinery के अंदर, if they are willing or if they want to bring change, they can do it within days, within ours. और ये वर्ल्ड बैंक भी कहता है कि भी इट इज नॉट अबाउट द कॉम्पिटेंस, इट इज नॉट अबाउट द कैपेसिटी, इट इज अबाउट द विल, कि अगर पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी वो चेंज लाना चाहे तो आराम से लेके आ सकती है, लेकिन हम क्यों नहीं वो लेके आते? बिकॉज इट इज नॉट इन माई बेनिफिट। एज आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि हमारे इंडिविजुअल गोल्स इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि वो नेशनल या सोसाइटी के बारे में अब सोचते ही नहीं है। आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ दैट ओके हाउ आई कैन मूव फ्रॉम X1 to X2 एंड आई कीप ऑन मूविंग विदाउट लुकिंग राइट और लेफ्ट के क्या मेरे साथ कोई और भी ग्रो कर रहा है या नहीं। दिस इज नॉट माई क्वेश्चन एनी। But if you look at other countries where nations have really prospered, they look and right and left कि भी मेरे साथ society की uplift कैसे हो रही है, and it is positive or not. So until and unless you don't bring that head out of that turtle shell, the turtle is not going to move. So I think इस वजह से आपका जो टैक्स रेवेन्यू है, दैट इज अ प्रॉब्लम। अगर आपके विद इन द कंट्री आपकी इतनी इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छी हो, लोग टैक्स पे करें, you don't have to go for these IMFs and seek money from World Bank. आप खुद भी रेवेन्यू इतना जनरेट कर सकते हैं फ्रॉम दैट टैक्स, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट डूइंग इट, और ये FBR वालों को भी पता है। So they also know that, but we worry about that we don't want to do that. That's where things are not happening. And why we are not doing it? Because I know I'm not going to get caught. This is, I think, there's a behavioral economist, Dan Ariely. ये वो बात करता है कि हम क्राइम करते क्यों हैं? क्योंकि हम पता है कि आई एम नॉट गोइंग टू गेट कॉट। जब आप वो वाली चीज ले आएंगे कि इफ आई मेक अ मिस्टेक आई एम गोइंग टू बी पीनलाइज्ड, यू सी, चाहे वो गवर्नमेंट सर्विस हो, चाहे वो कोई और अदारा हो, things are not going to go the way they are happening at the moment. थैंक यू डॉक्टर साहब। तो ज्यादा यही कई इश्यूज के रिजल्ट में ये निकला कि कल्चर चेंज जो है ना वो बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो हमें क्या लग रहा है, व्हाट डू यू फोरसी के वो कुछ उसके लिए अब विल है उस कल्चर चेंज के लिए इस मोमेंट पे खड़े होके? और जिस तरह रियल एस्टेट और मैन्युफैक्चरिंग की बात की है, इतना अच्छा टाइम है जिसमें रियल एस्टेट डाउन हुई हुई है, लोग उसमें पैसे नहीं बना रहे इस वक्त, एंड द कैपिटल कुड गो टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट, Absolutely. जैसे अभी डिस्कस लेकिन किया। वही वाली बात कि आई थिंक वी नीड दैट सेंसिटाइजेशन, कि जी आप लोगों को सेंसिटाइज करें दैट ओके वी नीड, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी एंड इट इज गोइंग टू गिव यू बेटर एंड सस्टेनेबल रिटर्न्स एज कंपेयर टू द रियल एस्टेट। थैंक यू। So, do you have time for one more short question? Yeah, of course. If Dr. Salman has the Sure, energy sure, sure. and the time, of course, please go ahead. Then we wrap up in about 4 to 5 minutes, I think around 8. I don't want to keep the. Okay, historically, there's been, obviously a huge debate in Pakistan about the civil-military relationship, and I hope, it's not sort of going beyond the scope of this conversation. But as Dr. Saab has said, that we shouldn't hold ourselves hostage to a particular system of governance or developmental ideology. So. My understanding is that this current setup is not necessarily, a bad thing. This hybrid setup, if it suits our needs, our culture, our system, our people, so maybe that's the way forward. And I'd like to ask Dr. Saab's input on that, what he thinks about the current scenario, and also about we all know that if the powers that be want to put their foot firmly down, they get things done. So why is it that all these structural problems that we face,
in our economy, uh, why is it that the armed forces are, sort of not geared towards removing those obstacles, to sort of let us embark on a more sort of forward-looking orientation? वसीम साहब, I first agree what you said कि जी अगर सिस्टम काम कर रहा है and if in this way the system is working, let it work. Hybrid अगर चलता है चल रहे थे. और I'll again give you जहर the लगता same है मुझे। statement. Uh, it doesn't matter if the cat is black or white till it catches the mouse. अगर आपकी इकोनॉमी चल रही है so let the bigger objective work. नंबर टू, जो आपकी ऑब्जर्वेशन थी कि व्हाई व्हेन यू नो कि थिंग्स आर बैड व्हाई दे आर नॉट गेटिंग फिक्स्ड. समटाइम्स आपकी वो जो एक्चुअल जो सिम्टम होता है वो इतना ग्रेव होता है दैट इट टेक्स टाइम फॉर द रिकवरी. And I'm not talking about any particular group or any particular institution कि जी वो आके सही करे. I think I always say कि जी अगर आप planning commission को देखें या अगर आप ministries में देखें, that is full of economists. Why do you need Stefan Durkin coming from University of Oxford और वो आपको बता रहा है कि जी how the economy has to be fixed. So maybe एक ये भी हो सकता है दैट यू डोंट ट्रस्ट योर पीपल. दूसरा ये है कि यू डोंट ट्रस्ट द कॉम्पिटेंस ऑफ योर पीपल दैट दे कैन एक्चुअली कीप मेक द इकोनॉमी वर्क. एंड लास्ट वन के इट टेक्स टाइम. उसमें हम मेरिकल्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. और हमारी एक सोच ये है कि जैसे ही आपने इंटरेस्ट रेट लो किया इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाएगी. नो, इट टेक्स टाइम. एंड अभी जिस तरह जहांजेब साहब बताया था कि जी financial markets, capital markets, that is a good opportunity. We should be going for it. You need to sensitize people. So एक दफा अगर आपका वो sensitization आ गई, so that can actually work. So कोई एक particular institution fix करेगा? No, that is not an answer. But I think what we have to do is that it has to be a concurrent approach where every institution is doing what it is supposed to do. I think that should be a way forward. Okay, I should not be waiting that someone else will be doing my job. जो प्लानिंग में इकोनॉमिस्ट बैठा हुआ है, जो आपका चीफ इकोनॉमिस्ट है, जो बैंकर हैं, जो आपके एकेडेमिया है, वो अगर अपने अपने काम करें, यू डोंट नीड एन एक्सटर्नल हेल्प एंड अगोरा टेलिंग यू हाउ टू रन योर कंट्री or telling you the strategy, because my dynamics are totally different. The way I understand my economy or a country, no one else can do that. हाँ, बिल्कुल नॉलेज की कोई बैरियर नहीं. आप बिल्कुल बाहर से पढ़ें, उनसे नॉलेज लें, उनसे पूछें. लेकिन अगर आप ये कहें कि जी आप आके इसको फिक्स करें, नहीं. एज एन इंस्टीट्यूशन योर जॉब इज टू बी ऑन द बॉर्डर. डोंट टेल मी कि इकोनॉमी कैसे फिक्स होती है. लेकिन हाँ, जब तक आप मदद कर सकते हैं करें. लेकिन दैट इज माई जॉब. आई शुड हैव द कॉम्पिटेंस टू फिक्स द थिंग्स. Thank you so much, sir. Any further questions? Shahzad, I understand you have to leave. Do you Very have any quickly, comments? sorry, I know we've run out of time. I was very interested in the AI policy, the federal policy framework. I had seen some draft documents a while back, but I guess those have been updated since. So if we could have a session on how that translates into capacity building for Pakistan, that would be very, very useful. Because as you mentioned, That is university. a possibility. Dusra, like in July, we are having a session in Karachi on the AI policy. So Very good. what we will be doing is that we can invite you and we can have and we will be having the same discussion. इस वक्त जो हमारी AI policy इसके 5 pillars हैं. So जी. one of the pillar is cyber security. The second one is the capacity building. Third is public and private. Fourth is AI ethics, and the fifth one is internationalization, की आपकी collaboration कैसी है. So हम because Karachi is the hub in terms of these businesses, so we are coming and having a round table over there. And if you are interested, you can share your email, and I can send you the invite to be the one of the participants for that round table. Oh, That that is would be the best wonderful. we are Thank you having. so much.
Shukriya, because we've designed some courses actually for the 14 to 19-year-olds in high school. So we are doing Sure. an MVP to see what traction we get from students like in real time. Naini, it And would be yeah, great to have so I'm your looking inputs forward to on it. the session, Thank you please. so much. Good to hear that. And I think true to the name of this platform, Rise and Shine Pakistan, hopefully we can build bridges, make friends, and help Pakistan rise and shine. Um, Inshallah. uh, of course, we're out of Inshallah. time, but I'll just close by saying that, everybody, I request you all to give it a think. This platform, just we need to have a North Star, right? I mean, there's so much that we've discussed and there's so much that is always discussed, but we need to have a bit of a focus as well, right? Maybe pick 1, 2, 3 areas which can be small wins for us in terms of perhaps devising a new policy, tweaking a policy, coming up with a new policy. So I think we need to have that sort of North Star in the back of our heads. But of course, we learn as we go along. This is very much the first webinar. But thank you all for joining, and please stay in touch. I think we need to figure out a way of staying in touch as well. I think I prefer email because it's a bit more formal. I think with the WhatsApp group, you end up having a conversation about everything except the purpose for which it was set up. So I think we will probably set up an email group and then take it from there. So Sure. thank you once again, Dr. Salman. A wonderful, insightful session. I wouldn't say, as I say, learned a thing or two about economics. I think it was more than a thing or two. And having studied economics for 7 years, that says a lot about how insightful and comprehensive your presentation was. So thank you so much for that. And thank you Always a pleasure. all those who joined. And we hope to keep in touch and keep learning from each other and, to further the mission of this platform. So thank you once again. Have a nice evening. Thank you. You also. Have a nice evening. Okay, Allah Hafiz. Hafiz. Allah Allah Hafiz. Hafiz.